Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotion. हर हफ्ता प्रभु हम हर एक के साथ रहा, प्रभु हमें चला रहा है अद्भुत रीति से और प्रभु को हम सारी सारी महिमा देते हैं। इन पिछले दिनों में कई लोग बीमार थे, अनफॉर्चुनेटली हम भी बीमार पड़े। हमारे घर में भी all four of us were down with viral. We had to call up a doctor, our dear brother Vinod. तो उन्होंने कहा कि ये प्योर वायरल है और मेडिकेशंस लिए। और सबसे बढ़कर आप सबों का प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप लोग का प्रार्थना का बल से वी आर ऑल फाइन। हम लोग सब अभी नो फीवर, नो सिकनेस, लेकिन वो जो तंदुरुस्ती अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आया है। Keep us in prayer that we can be strong completely again. And at the same time हमारे कलीसिया में कई लोग इन दिनों में बहुत ज्यादा कॉफ और सर्दी से जूझ रहे हैं। That's because of the weather conditions. We all need to take care of ourselves. Above all, let's believe that God's protection is over our lives completely. Hallelujah. पिछले दिनों में as we were hearing from Pastor Godfrey the devotion about trials in life, truly sometimes these trials are so hectic कि हमें कभी कभार लगता है कि प्रभु क्यों ट्रायल्स, क्यों ऐसे, क्यों तकलीफें आना है। लेकिन as the word says, जब हम इस दुनिया में हैं, there are troubles, there are pain, there is issues, बीमारी है, ये सारे चीजें इस दुनिया में है। लेकिन we are so grateful to God that God is with us and God strengthens us to overcome all those trials in our lives. Hallelujah. Today evening का जो devotion के लिए a small word आपके सामने ले आऊंगा, वो है from the book of Ephesians chapter 4 verses 1. एफिसियों किताब उसका 4वां अध्याय उसका पहला वचन। वहां पर पौलुस कहता है, walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. The NIV में it says, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Hallelujah. What is Paul trying to tell us there? वहां पर पौलुस हमसे क्या कहता है? एक सिंपल मैं उदाहरण आपको दूंगा। मैं जब मिनिस्ट्री में आने से पहले when I was working in a corporate, एक कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, almost 2 साल I was working as an associate, एक associate के लेवल पे काम कर रहा था। There was a team, उस टीम में I was just taking calls और उस टाइप का काम मैं कर रहा था। उसके बाद में then God gave me this opportunity to be promoted as a टीम लीडर या फिर एक टीम मैनेजर का रूप में मुझे वहां पर प्रमोशन मिला। उसके बाद में क्या हुआ, when I got the promotion as a team leader, now I'm not an associate anymore, but there are almost 20 associates reporting to me. So जिस दिन से मैं टीम लीडर बना या फिर the next day when I got the promotion as a team leader, when I got that letter in hand that you are from today onwards a team manager, there were a lot of expectations over me. अभी तक मेरा जो जिंदगी, कल तक जिस तरह से मैं ऑफिस में मेरा लाइफ था वैसा नहीं है आज से मेरा लाइफ ऑफिस में। क्यों? क्योंकि अभी तक आई वॉज एन एसोसिएट, एक एसोसिएट था। एसोसिएट का क्या था, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थे। ऑल दैट आई वुड हैव टू डू इज, मुझे कुछ नंबर्स आते हैं, आई कैन मेक कॉल्स, डू सम वर्क, आई कैन टेक माय ब्रेक्स, आई कैन कम ऑन टाइम, लीव ऑन टाइम, आई कैन टेक माय लीव्स, ये सब होता था एज एन एसोसिएट। लेकिन व्हेन आई मूव्ड इनटू द नेक्स्ट रोल, the next day itself, when I became a team leader, I can't roam around with my associates. अभी तक जो मेरे friends थे उनके साथ में ऐसे मैं घूम नहीं सकता। There is a limitation. अभी मुझे सिर्फ 8 घंटा काम से नहीं होगा। I need to spend more time. I need to make reports. I need to talk to the clients. I need to behave like, what do you say, a team manager. You're getting it? एक दिन में everything was changed for me because now I am in a new position. The expectations were different, responsibilities were different, and I had to walk. I need to live according to that position. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक जो एज एन एसोसिएट मैं कर सकता था, लाइटली ले सकता था काम को, अभी मुझे नहीं होगा। अभी क्योंकि देयर इज अ पोजीशन ओवर मी।
इसी तरह से है, वचन कहता है जब आप और मैं इस दुनिया में हैं, वी आर ऑर्डिनरी, हम लोग इस दुनिया में ऑर्डिनरी थे जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना। लेकिन when you and I got that calling over our life, जब परमेश्वर का बुलावट हम पर आया, God called us, He made us His children, हमें उनके संतान बनाए, उनके बच्चे बनाए, उनके एम्बेसडर बनाए। Now there is a new position that has come for you and me. समझ रहे? अभी तक हम लोग एक नॉन बिलीवर, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था इस दुनिया में, लेकिन आज से, जब से मैं प्रभु में हूं, एक नया लाइफ प्रभु ने दिया है। God has made me a new creation. That's the right word. God has made me a new creation, and when I am a new creation, God has certain expectations over my life. और पौलुस कहता है, अगर आप जानो आपके ऊपर जो परमेश्वर का बुलावट क्या है, then you will walk worthy according to that position. Huh? You getting it? We can't live like the normal worldly people live. Though we are in the world, we do not belong to the world. हम इस दुनिया में हैं, लेकिन आज से हम इस दुनिया वाले की तरह नहीं रह सकते। हमारा सोच has to be heavenly, हमारा lifestyle has to be heavenly, हमारा विश्वास has to be heavenly, हमारा बोलचालन has to be different. Everything should reflect the love of Christ. हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में, हमारा एक जो चैलेंजेस आते हैं, जब तकलीफें आती है, प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में आते हैं, how am I facing it, how am I opposing it, या फिर how am I handling it, it all shows how am I walking in my life. Am I walking worthy according to the calling that God has put over my life? आमेन। जब संकट आए, जब तकलीफें आई, पिछले दिनों में बहन, we were going through, it was normal, viral था, लेकिन जब घर में सबों को होता है, I think this is the first time ever that all four of us were unwell. हम लोग कभी भी either प्लॉजी will be unwell, या फिर मैं बीमार रहूंगा, या फिर बच्चे होंगे, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि हम लोग चारों बीमार। And for 4 days I did not even get out of my house. It has never been like that. मैं घर के अंदर ही पूरी तरह से उस सोफे पे, उस बेड पे मैं सोया हूँ। And then I'm saying, God, is this the way our life is supposed to be? There were times when we feel like cribbing, थोड़ा complain करने, लेकिन then I'm like, no. God has a great calling. God has a great purpose in our life. I cannot be like the way world lives. I cannot handle situations the way world handles, because I'm a child of God. God expects me to handle with faith. हालेलुया। मुझे सुनने वाला अगर कोई है जो आज तकलीफ में, प्रॉब्लम में, you are at that verge of you're thinking, God, how do I handle this? Let me tell you, you and I are called. We are called. God's calling is over us. God has a purpose and a plan over our lives, and we need to walk worthy according to that calling. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Why must we walk worthy of our calling? Why must? हम लोग क्यों परमेश्वर को उस बुलावट के अनुसार या फिर उसके योग्य अनुसार हमें क्यों चलना चाहिए? पहला पॉइंट, because it is a privilege to be chosen by God. Hallelujah. Somebody say an amen to it. If you and I have the privilege to know Jesus, come on, it is a privilege. It is a privilege in our life. There was an episode where Jesus was asking the disciples, who do you think people talk about me, और लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मैं कौन हूँ? So everybody was saying, someone is saying you're a prophet, somebody is saying you're Elijah, all those things. लेकिन जब पतरस ने क्या कहा, पतरस का, God, Jesus, you are the Son of God, you are the Messiah. तब Jesus ने कहा, this has been revealed to you by God. परमेश्वर ने या फिर पवित्र आत्मा ने तो तुम्हें ये रेवलेशन दिया है। अगर आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में स्वीकार किया, and we are his children today, I am telling you, it is not revealed by some pastor, it is not revealed by some man in the world, but it is purely heaven, Holy Spirit that has revealed it to you and me. And you and I, we are privileged to receive that revelation of Jesus.
and to follow Him and to be called the children of God Most High. Hallelujah. When you read Matthew chapter 22 verses 14, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 14 वचन में it says, for many are invited but few are chosen. Come on, God is calling the world. दुनिया में सभी लोगों को invite कर रहे हैं to know Christ. लेकिन only few are chosen, and you and I are those privileged ones to be chosen and being saved by the blood of Jesus. Hallelujah. आपको और मुझे वो salvation मिला, वो सबसे बड़ा highest privilege है, my dear children of God. And when we know the value of it, हम जब इस उद्धार का value, उसका importance को जानेंगे, come on, we will not move away from God. We will not move into the world, but we will walk according to the word. We will walk according to the plan of God. We will walk and live a life which is worthy of God's calling over our life. हम लोग कई बार हमारे जिंदगी में हम लोग we don't live according to God's expectation because we do not understand the value of the salvation. आज भी हम दुनिया के चीजों के पीछे हम भाग रहे, दुनिया के छोटे छोटे टेम्परेरी चीजों के पीछे we are running behind. We are like, God, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? But we are forgetting the fact that, come on, the world life जो दुनिया में जितने भी अमीर हो, जितने भी लोग हो, everything, it is all temporary. But you and I have received something which is permanent, that is eternity that God has promised us. जब हम उसे वैल्यू करेंगे, जब हम उसे जानेंगे कि हम कितना privileged है, we will know how to walk worthy according to His calling in our lives. Hallelujah. Millions are dying without knowing Christ. Millions of people are dying every day without knowing the truth. But you and I had the privilege to know the truth. And this truth has set us free completely. Yeah. That is why we should walk worthy. Hallelujah. Second reason why we must walk worthy, because this life that you and I have is a short life. ये एक छोटा जिंदगी है, ये एक छोटा सीजन है, ये एक छोटा अपॉर्चुनिटी है. We do not know how long do we have a life in this world. जब तक इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें जिंदगी दिया है, जब तक हम जिंदा है, जब तक we have that opportunity, come on, let's live a life which is worthy according to His name and His calling over our lives. Many people think, come on, मैं जब 60 years का हो जाऊंगा उसके बाद में मैं जिंदगी बिताऊंगा. नहीं, after some years I will live for the Lord. No, sorry, we do not know what holds for us tomorrow. There are many people who make plans after my retirement time, or else after this many years, after I have settled something, I have settled this, I will work for the Lord, I will live for the Lord. No, that's a wrong theory, my dear. Today when you have time, when you have an opportunity, serve God. Today when God has given you life, live for Him. Today when God has given you this day, come on, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. It is not like I will wait for tomorrow. No. Today, if God has given me, voice today, let me speak today. If God has given me a day today, let me rejoice in Him today. Let me live a life that's worthy according to His calling. Don't forget it, my dear people. Don't wait for tomorrow. Don't wait for after some years. Don't think I will settle few things. मैं इसे करूंगा, मैं ये करने के बाद, मेरे लाइफ में सेटल होने के बाद मैं करूंगा प्रभु के लिए. नहीं, अगर प्रभु के लिए कुछ करना है, आज करना है. अगर प्रार्थना करना है, आज करना है. अगर आज वचन बोलना है तो आज बोलना है. Want to live for the Lord? Live today. We do not know what is kept for us tomorrow. The life in this world is short and uncertain. That is why when you have the opportunity, walk worthy of His calling. Hallelujah. Give your best to the Lord when you can. Hallelujah. Praise the Lord.
Oh, Ecclesiastes chapter 9 verses 10 says, life is short. Oh, wisest man on earth, Solomon, King Solomon says, life on this earth is short, so live it fully, live it for the Lord. Live according to His word, live a life which is worthy according to His calling. Then you and I will fulfill the purpose of God in our lives. Hallelujah. Third one, let me go quickly. Because it is by His grace you and I are saved. Why we should walk worthy? क्यों हम उस बुलाहट का योग्य हमें चलना चाहिए? क्योंकि अगर हमें और आपको परमेश्वर ने बुलाया है और उद्धार दिया है, वो हमारा खूबी के कारण नहीं है. It is purely 100%. It is because of God's grace. परमेश्वर का दया, उसका करुणा, उसके अनुग्रह के कारण है. इसलिए हमें उसके योग्य चलना चाहिए. 1 Corinthians chapter 15 verses 9, it says, by the grace of God I am what I am. Paul says वहां पर 1 कुरिन्थियन उसका 15वां अध्याय उसका 9वां वचन में पौलुस कहता है, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं हूं जो मैं हूं. अगर आज मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा है, अगर कोई अच्छाई है, अगर कुछ पाया है, वो मेरा खूबी के कारण नहीं है. पौलुस कह रहा है. अगर पौलुस का वो वचन है तो मेरा और आपका भी वही टेस्टिमनी है. Yes Lord, if I am alive today, it's only by your grace. If I am your child today, it's only by your grace. If I am a pastor today, it's only by the grace of God. If my family is with me, it's only by the grace of God. If I have a job today, it is only by the grace of God. If I have a church today, it's only by the grace of God. Everything that I am used enjoy today, come on, the life that we have, the Bible says it is all by the grace of God. और जब हम उस विषय को जानेंगे, ये प्रभु का अनुग्रह के कारण है. Come on, nobody has to preach to me, nobody has to come behind me with a stick, nobody has to keep pushing me. I will know how to walk a life which is worthy in His sight. Hallelujah. I will not move away from God's word. I will not say no to God's word. I will not say no to obeying God's word. I will say, God, I want to live a life which is pleasing in your sight. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verses 4 through 7. एफेसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 4 से लेकर 7 तक का वचन में कहता है, we were all dead in our transgressions. हमारे पापों में हम सब मरे हुए थे. We were all dead in our transgressions. लेकिन by His grace we are saved. परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम और आप जीवित है. हालेलुया. उस परमेश्वर को कितना कितना महिमा देना चाहिए. उस परमेश्वर को कितना ताली बजाकर. We should be like so thankful to God and say, God, we thank you that you chose us by your grace. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians chapter 1 verses 4 through 6. एफेसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन में कहता है, God has adopted you and me and made us His sons and daughters. परमेश्वर ने हमें और आपको जो इस दुनिया के दुष्टता में, इस दुनिया के पाप में, इस दुनिया के अंधकार में थे, वहां से प्रभु ने हमें अडॉप्ट, He chose us. उसने हमें बुलाया, उसने हमें चूज किया, उसने हमें सिलेक्ट किया, अपॉइंट किया एंड हमें अपने संतान बनाए. That is why we should walk worthy according to His calling over our lives. Hallelujah. Praise the Lord. Last one, एक और चीज कहकर मैं जल्दी खत्म करूंगा. It is more natural to live the life of an unbeliever than of a believer. Yes. इसका मतलब हमें इस दुनिया का साधारण जिंदगी बहुत नेचुरल है. We all can live it because it's very easy to live a life like that where there is no control, there is no self-control. We can just live the way we want. But to live a life according to God's word is little difficult. It is little challenging. It is little, what do you say? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे. That is why we need to
मेक एफर्ट्स, हमें एफर्ट्स करना चाहिए, हमें श्रम लेना चाहिए, हमें वी नीड टू ट्राई हार्ड, वी नीड टू प्रे, वी नीड टू रीड द वर्ड, वी नीड टू लिव अ लाइफ, कम ऑन, अकॉर्डिंग टू दैट calling over our lives. Hallelujah. There are many things. वहां पर जब हम पढ़ेंगे, we will know what are the things that God is expecting from us. हमारे जिंदगी से, when you read Ephesians chapter 4 का पहला अध्याय, 4 का 1 and 2, उन वचनों में, when you're reading all those verses, you will know what is this living worthy, being humble. Walk worthy is walk in humility, be humble in the presence of God. Oh, then it says about gentleness, do things gradually, gently. Don't be harsh on people, don't be harsh on life, but be gentle to everyone. Oh, be patient. परमेश्वर के पास हम धीरज रखते हुए रहना, that is important. Have patience in our life, that we are able to wait upon the Lord when there is a delay in receiving the answer from God. Let's just be patient to wait on the Lord. That is living a life which is worthy. Hallelujah. Tolerance for one another, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, टॉलरेट करना. Oh, be kind and compassionate to each other, staying united with people, ensure there is peace in our lives, in our family, wherever we are, there is peace. Come on, these are all things what Bible speaks about a life of a child of God. Above all, हमारा जिंदगी ऐसा जिंदगी हो जिसमें विश्वास हो, प्रभु में विश्वास हो. जब तकलीफें आए, प्रॉब्लम्स आए, when everything looks so impossible in front of us, still be confident to say that my God is with me. Even when I don't feel His presence, still have the confidence to say, I know my God is with me. He will not leave me. He will not forsake me. He will not reject me. Hallelujah. वो confidence हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है. We serve a loving God. Our God is a gracious God. Our God is a loving God. He is an unconditionally loving God. उस प्रभु को हम जितना भी जानेंगे उतना ही हम उससे प्रेम रखेंगे. इन दिनों में let's love our Jesus, let's love our Father, let's love Holy Spirit. Let's say, God, I want to live a life which is worthy according to the position that you have put me as a child of God. जब दुनिया वाले मुझे देखे, मेरे परिवार को देखे, मेरे जिंदगी को देखे, let them know that there is a difference in this person. He is no ordinary man. कल तक ऑर्डिनरी था, लेकिन आज से वो ऑर्डिनरी नहीं है. इसके अंदर कोई डिफरेंस है, and that's the love of Jesus in our life. Hallelujah. May the Lord bless each one of us with this word. इन दिनों में हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे. हमें पता नहीं ये लॉकडाउन कितना दिन और जाएगा, हमें पता नहीं ये पैंडेमिक कितना दिन और जाएगा, हमें पता नहीं ये वायरल कितना दिन और जाएगा. Come on, we are all going through lot of uncertainties. लेकिन इसके बीच में भी God says walk according to the worthy, according to the calling that God has put over our lives. Hallelujah. May the Lord bless us all. Hallelujah. आइए हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. हमारे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते सच्चे शाम के समय के लिए. प्रभु हमारे जिंदगी में प्रभु जब उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, कई प्रकार के मुसीबतें आते हैं. लॉर्ड, देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव क्वेश्चंस, गॉड, हाउ डू वी हैंडल दिस? बट वी वांट टू थैंक यू गॉड फॉर योर वर्ड. वी वांट टू थैंक यू गॉड फॉर द होली स्पिरिट. थैंक यू गॉड फॉर द salvation you've given us. Thank you God for the strength that you've given each one of us, and above all the promise that you've given us, that you will never leave us, Lord. You will never forsake us, but you will be with us throughout this journey, Father God. Especially today's word that we heard, Lord, we need to live a life which is worthy of our calling, Father. We know that we are privileged to be called your children. प्रभु, ये हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा भाग्य का अवस्था है प्रभु, कि हम तेरे संतान, तेरे बच्चे माने गए. प्रभु, हमें तो आशीष कर कि हम उसके जिंदगी के अनुसार, एक बच्चे के जिंदगी के अनुसार, एक परमेश्वर के संतान के जिंदगी के अनुसार हमें जिंदगी बिताने के लिए हमें तू आशीष कर. Help us to live a life, Father, according to your
your expectations, your standards, Lord. I pray that the Holy Spirit, you will enable us all. You will cover us all. You will guide us all completely. We know it's impossible with our own efforts. हमारे श्रम से प्रभु impossible है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का जो आपने हमारे अंदर दिया. पवित्र आत्मा तो हमें सहायता कर इन दिनों में कि हम प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जिंदगी को बिताए. प्रभु हमारे परिवारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. खास कर अगर if there's anybody who's watching me who's unwell right now, Lord, I pray for your healing over them right now. Lord, I pray that you will send your word and you will heal your people right away. You will touch them, Father God, that cough and that weakness and that BP and every kind of uneasiness that your people are going through. In the name of Jesus, we rebuke it and we speak complete healing right away, Father. May your name be glorified. You will strengthen us all, Father. We thank you, Lord, for your healing. We thank you for your protection. We thank you for your favor over our lives. We give glory, honor, and praise to you alone, Father. We bless your holy name. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say, Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you once again for joining me this evening. May the Lord continue to bless you all. हम जल्दी मिलेंगे. Till we meet again. Stay home, stay safe.